Tisang Gyakyob the Droshinbe Konsa Shodan Jewe Nintung Te, Pumi Dizuki Sikyune Lende Tang, Tishin Tega Pyoge Pangshin Sakhanki, Dase Sane Pumi Kachi da Gyagawa, Tishin Chimi Kachi la Netsu Tito, Gongsu Jeyuki Jendu Shube Konam Giti da Sonason. His Holiness and the young boy, this has now become a very emotional question. And I had liked to ask this question as to who is the real victim in this story. Some say the boy, the family, but I find that the boy is fine. He had spoken well after the event. The mother was fine. The mother had spoken well after the event. All the 120 students who were there in that event had no complaints whatsoever. I looked through all the interviews by the Tibetan media after the event was over. So at that time, there was nothing there. And it was already in the public media, in the public domain. And then, now, the fact of the matter is, His Holiness is now 87 years old, is going to be 88. Because of his age, he needs to be supported from both sides. And you want to accuse an 87, 88-year-old man with this kind of a libel? And His Holiness has always lived in the sanctity of an oath-bound Buddhist monk, including celibacy. And his years of spiritual practice has him gone beyond sensorial pleasures. He has always been preaching this, the sensorial pleasures of eye, nose, mouth, body. All these are very, very temporary. So you need to go deeper to redeem yourself from this samsara. And someone who preaches that, do you think will be influenced by a physical touch? He is beyond all that. And then the personal integrity of His Holiness was never ever in question in the last 87 years. So how can people pass a judgment on one incident? And that too, not knowing the full sequence of the event. And he lives an unblemished life, preaching and practicing compassion, non-violence, and oneness of humanity. All his life. However, the recent incident involving His Holiness the Dalai Lama and the young boy, in full public view, it didn't happen in some corner or some room or some, undescriptive place. And this was perceived and interpreted differently. I don't blame them. People might have their opinion. They saw it that way because the clip was tailored for that. The clip was tailored for that. And His Holiness was then now being labeled all kinds of names. Maybe for the people who are giving these names, it's an individual case, an individual perception. But His Holiness, for us, is the reincarnation of Avalokiteshvara, the Lord of compassion. And His compassion and His love extends beyond all this. And that really hurts us. Please understand this. We are hurt by the insinuations. Now, if I have to share you how His Holiness has been engaging with people all through his life. Look at all the kind of pictures. His Holiness and Desmond Tutu, when Tutu was here, I was there. They are playing with each other like small children. Look at the picture with His Holiness with his pout and Tutu on the other side. That also, then you could say that, oh, His Holiness may have sexual thing for Tutu. And then if His Holiness hugs a old lady also, does that imply that thing? Not at all.
So let me take a little bit of time because this is a serious issue for us. And whenever you have seen His Holiness meeting with political leaders, I've heard of His Holiness holding ears of presidents and then touching foreheads. And that's the highest honor from a Buddhist perspective, for a High Lama to touch forehead with each other. And His Holiness is very unique in that sense. And that is why he is so famous. One of the, but what happened on that day was a little gross for some people. You know, and so holding hands, nose rubbing, the Maori style. His Holiness is very happy doing that because since he was in New Zealand many years ago and rubbed nose, and he rubs noses with many of his guests. And I've been witness to many of these because now I was in Dharamsala for more than 35 years. What, 25 years. 25 years. So I know how these things happen. And then cuddling, sometimes holding your nose. So all these are part of His Holiness antics that His Holiness does. And then forehead to forehead greeting are genuine manifestation of His Holiness compassion for all human beings, irrespective of their status in the society. And His Holiness was also used to play pranks or engage in jovial interactions to amuse the gathering. Now, fact of the matter, on that day, was this program was held in a public place, the Chuglakang, just opposite to the residence of His Holiness the Dalai Lama on 28th of February. There were more than 120 college-going students, part of this M3M delegation, who asked to seek his audience. And it was a public event that was covered by the media. And all these happened publicly, not everywhere else or anywhere else. And it was the same boy who we are envious because he got this opportunity to welcome His Holiness, hug His Holiness, all those blessings he got, but others perceive it differently. And it was the same boy, when His Holiness arrived, he broke the coconut to welcome His Holiness. Auspicious welcome. And then 2 members of the M3M delegation spoke at that event. Then His Holiness spoke at length about the topic. And the seriousness of that topic, nobody talks. Because that doesn't benefit anybody. That doesn't increase the TRP. You know, and then, after His Holiness spoke, it was question answer session. 3 elders asked the question. Then the 4th one was this young boy again. And if you see the video, he was asking His Holiness, can I ask one question? Can I hug you? His Holiness didn't even understand that because His Holiness has little impairment in the left ear. So the translator was explaining to His Holiness that this boy wants to hug you. And His Holiness didn't hear well from the left. So on the right hand, another personal secretary of His Holiness informed His Holiness, this boy wants to hug you. Then His Holiness said, okay, come. It's not like His Holiness went on the boy and jumped on him. It's totally different, you know. And the boy's mother was sitting on the right-hand side, just next to Professor Samdon Rinpoche. And the mother was also asking the boy to come up. And just as we are Asians, we know how grandfatherly affection can be. But this went a little beyond. You know, so all these happened, and then His Holiness gave an innocent, grandfatherly, affectionate demeanor and greeted the boy. That was followed by His Holiness' jovial prank about the tongue. Okay, and that was meant to be, from my perspective, that was meant to be amusement for the. For others. And all this happened in the presence of the family, of the mother. Now, after that, the videos that you don't see, because it was tailored, after that, again His Holiness embraced the boy. Both embraced each other.
Then His Holiness advised this boy, we are same human brothers and sisters. Now you should look at those good human beings who create peace and happiness, and should not follow human beings who always kill other people. You should not look at those people. If you see the video, all those are there. If you want the full coverage, we'll try to make it available to you from top to bottom. Watch the whole thing. And then after the event, Radio Free Asia, Voice of Tibet, they interviewed many of the participants. And one of that was the boy, the same boy. And the boy said after the event that it was amazing. This is boy's words. The video is also there. It was amazing meeting with His Holiness. And I think it's a really great experience meeting somebody with so high positive energy. It's a really nice feeling meeting him, and you get a lot of that positive energy. It's not just like that, but once you get the positive energy, I think you are happier, and it's a better thing to smile a lot more. It's really a good experience. This is just one of the transcription. There is another transcription with Radio Free Asia, who had also interviewed the same boy. Now, speaking to Voice of Tibet, again, the mother of that boy, immediately after the event, the mother said, since we are looking at seeking blessings from His Holiness the Dalai Lama, and today we got this opportunity, especially my family was there with me. All the students who graduated from I Am Power Academy of Skills were also present. We are totally blessed to get this blessing from His Holiness the Dalai Lama. He came and addressed in person and taught about peace that the world needs and how everyone needs to feel together like brothers and sisters. I absolutely cannot express how I feel getting blessed by him. Thank you. That is the boy's mother. Now, who is the victim? The mother is not a victim. The boy is not a victim. They are not complaining. The victim here is His Holiness the Dalai Lama. Now, why is this happening? I have two conclusions to this. One, however, through our investigation and as per prima facie evidence, we found that the initial instigators are pro-Chinese sources. Now, you are all journalists. Please find out how this resurfaced again and who is trying to use that. Chinese sources that itself explains the motivation behind making this video clip viral. It needs no explanation as to who would gain from maligning the image, reputation, and legacy of His Holiness the Dalai Lama. Considering the scale and extent of the orchestrated smear campaign, the political angle of this incident cannot be ignored. Then, for the general public who considers or who feels this is disturbing, we would appreciate if you could watch and listen to the full video of the event to get a holistic understanding of the whole program, including His Holiness' speech. We are sure you will be able to differentiate between lust and love. Yeah. That is where we fail. So, and the unfairness of defaming one of the most respected and liked global icons of peace, and that narrows the scope of due diligence and fair judgment from people who are making a judgment on this. मेरे को तो लगता है कि ये जो क्लिप निकाला है वो गलत है, फेक है, क्योंकि गुरुजी से हम मिलते रहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसे इंसान वो नहीं है। इतनी इस उम्र में आके अगर किसी के ऊपर ऐसा ब्लेम करना, ये तो गलत चीज़ है। ये टोटल ही फेक लग रहा है मेरे को।
मैंने भी वो क्लिप देखी है, सिर्फ वही इन्होंने क्लिप निकाली है, बाकी तो कुछ नहीं, इन्होंने आगे पीछे का तो कुछ नहीं बताया। तो वही क्यों कि इसको वायरल कर रहे हैं? हमें ये फेक लग रही है चीज़। हम लोकल आदमी हैं, हमें पता है कि गुरुजी कैसे है। बहुत अफसोस हो रहा है कि जो प्रेस वाला ने जो वायरल जो फैला हुआ है, वो वायरल फैलाने से 100 बार सोचना चाहिए। पहले पूरा वीडियो देख के तब करना चाहिए। उसने थोड़ा छोटा छोटा जो मैं पूरा वीडियो नहीं देखा है, उसने शॉर्ट में वो वायरल का है। उसमें हम लोगों ने वैसे तो मैंने तो पूरा वीडियो पूरा देखा था, हमको तो इतना लगा नहीं है। हमारा ही सुने ऐसा कर भी नहीं सकता है। मेरा कहना इतना है। सभी को सबसे पहले तो दोनों हाथ जोड़ कर नमस्कार बोलता हूँ। तो आज मैं एक दिल की एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी को, सभी वर्ल्ड को, पूरा वर्ल्ड को बोल रहा हूँ। जो अभी जो हमारे जो गुरुजी का नाम पर एक सोशल मीडिया में बहुत गंदे गंदे लिख रहा है, गंदे गंदे बात कर रहा है, गंदे गंदे न्यूज़पेपर में दिखा रहा है, ये एक बहुत सभी वर्ल्ड को बोल रहा हूँ कि ये बहुत दुखी की बात है। ये गुरुजी एक 14 दलाई लामा जी पूरे एक संसार के लिए, पूरे संसार के लिए एक अच्छी होती है। ये खाली तिब्बती का नहीं है, खाली टिबेटन के लिए नहीं है, सारे संसार के लिए। ये हम सभी इनको गुरुजी के साथ देना चाहिए। हम एक दो आदमी का नहीं, हम बहुत दुख है, बहुत दुख। ये खाली टिबेटन के लिए एक गुरुजी एक ऐसी है कि सारे संसार के लिए पूजा करते हैं, खाली टिबेटन के लिए नहीं होते हैं। इसलिए आप लोगों को गुजारण करते हैं कि सब एक गुरुजी के साथ दिया जाए। हमें ये बहुत दिल से बोल रहा हूँ, दिल। जैसे हमारा टिबेटन है, हमारा हर घर में गुरुजी के फ़ोटो रखते हैं, जैसे है कि 5-6 फ़ोटो रखते हैं। ये तो हम सुबह से लेके शाम तक पूजा करते रहते हैं गुरुजी का। तो सभी हमारे जो ये कि ना, जब बुद्धिस्ट पूरा वर्ल्ड में जितना बुद्धिस्ट हो, अगर बुद्धिस्ट ना भी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सभी हमारा गुरुजी के साथ दिया जाए। ये मेरे अपने दिल से बात बोल रहा हूँ। मैं आप लोग को सबको गुजारा करता हूँ कि हम तो बहुत दुख है, बहुत दुख, बहुत। रात का जो खाना खाता है, रोज़ जितना खाता है वो खाना भी खा नहीं सकते हैं। पानी पीना है तो पानी भी पीने के मान नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम बहुत दुखी है। पूरा हम अकेले नहीं है, सभी को दुख है। कोई रो रहा है, कोई देख रहा है, कोई सोच रहा है क्या करे तो क्या करे। ये बहुत गलत हुआ है। एक लड़का है, एक गुरुजी जो पूजा, जो गुरुजी ने जो इनको शिक्षा दी, हमारा जो टिबेटन एक लड़का को ऐसे किस्मत वाले को तो होते हैं, इसी को ऐसे एक दो हक किया, पप्पी दिया, जो भी करे। ये टिबेटन कल्चर का है। गुरुजी के बच्चों को तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं। ये आप लोग खुद सोच लें। ऐसे तो बहुत गलत है। अगर जो भी लिखता है, जो लिखने वाला हो, जो सोशल मीडिया में दिखा रहा है, बहुत ही गलत है, बहुत गलत। ऐसे तो हम तो विश्वास भी नहीं आ रहा है। खास करके हमारा इंडियन न्यूज़ वाला, ये खास करके इनको भी मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे नहीं कहे, ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत गलत है, बहुत गलत है। जैसे हमारा बच्चों को प्यार करना, गुरुजी के बचपन से बच्चों को बहुत प्यार करता है गुरुजी दलाई लामा जी। एक अवलुकशी का एक अवतार है ये गुरुजी। अब ये देखो 87 ईयर्स ओल्ड है, 86 का। फिर आप सोच लो ना, गुरुजी ऐसे सोचो तो सोचने के तो छोड़ना, बिल्कुल सोचने के दूर ही है। ये बिल्कुल गलत है ना। आप लोग खुद सोच लो। पूरा वर्ल्ड को बोल रहा कि गुरुजी के साथ है। दोनों हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, दोनों हाथ जोड़ के। अभी जो ये दलाई लामा जी के बारे में जो ये वीडियो वायरल हुआ है, इसे देखने और सुनने के बाद तो एकदम होश ही उड़ गया है। मतलब कहने के कुछ है ही नहीं दिल में। इतना तकलीफ़ हुआ, इतना दुख हुआ। तो फिर भी अभी इसके बारे में थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सब वीडियो देख के आप इतना अफवाह मत फैलाइए कि जैसे गुरु जी का नाम जो है इतना बदनाम हो रहा है सोशल मीडिया में। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से क्लिप को पूरा देख के उसको थोड़ा ये कर, इसको जजमेंट करके बोलने चाहिए। ऐसे वैसे किसी के बारे में बोलने की, वो तो इतना अभी जो है संसार में जो इतना सब मानते हैं, सब गुरु जी करके मानते हैं, उनके बारे में अगर ऐसा शब्द बोल दे तो बहुत ही एकदम दिल में कुछ भी एकदम दुख होता है और इसके बारे में कुछ बोलने के शब्द भी नहीं रहता है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसा अफवाह मत फैलाए कि गुरु जी का नाम जो बदनाम हो। वो तो एक संसार में सब जितने भी जीव जंतु है सब मानने वाले गुरु जी है। तो इसके बारे में इतने बोलने से, इतने ख़राब बोलने से हमको बहुत दुख होता है। तो इसके लिए मैं बहुत आप सबसे गुजारिश करता हूँ ऐसे क्लिप को आप मत देखिए और जजमेंट सही कर दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम नोरसंग है और मैं मैक्रोगन से अपना वेंडिंग करता हूँ
और मैं इस मैसेज को सारी दुनिया के आगे रखना चाहता हूँ कि जो आज परम पावन दलाई लामा के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और मैं ये सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब गुरुजी ने कहा कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बच्चा है, तो उन्होंने उनके साथ बच्चे जैसा ट्रीट किया है। ये बहुत छोटी सी बात है, इसको ज़बरदस्ती चंद एक स्वार्थी मीडिया लोगों ने इसको बहुत बड़ा इशू बना रखा है। तो प्लीज़ मैं सब लोगों से इसका मैं हाथ जोड़कर और दिल से कहता हूँ कि प्लीज़ इसको इतना बड़ा इशू मत बनाइए, इतनी बड़ी बात नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे अभी गुरुजी के बारे में एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो उसके बारे में मेरा खुद का तो सोचना ये है कि वो हमारे इतने बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं और एक बहुत ही प्यारे आदमी है वो। तो अगर कोई बच्चा उनके पास जाकर उनको रिक्वेस्ट करे और वो ना करे इतना बड़ा आदमी होने के बाद, तो वो उनके लिए भी ठीक नहीं था उन्होंने जो किया। लेकिन शायद कुछ लोगों को प्रोपेगेंडा बनाने का आदत हो सकता है, तो उन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग, हमारे दादा या जैसे भी बड़े बुज़ुर्ग, उन छोटा बच्चा उनके पास अगर प्यार जताने जाता है तो वो अपना एक्सप्रेशन अपने हिसाब से देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि मैं बचपन से उनको देखता आ रहा हूँ, उनके सामने रहता हूँ, गाड़ी में हमारे सामने से निकलते हैं सड़क से वो, तो हमारे मन में तो उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन कुछ लोगों ने जो ये किया है बहुत बहुत बुरा किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बहुत ही गलत बात है। ये जो है ना, ये जो दिया है गुरु जी के बारे में, ये गलत है। ये तो झूठी अफवाह उड़ाने वाली बात है कि ये चीज़ गुरु जी ने की, पर ऐसा नहीं है कि गुरु जी ये नहीं कर सकते, ये गलत है। So the first time I saw the video, I knew it was going to look kind of odd to the outside world, but you know, I've been living here a long time, and you know, I know people who are close to His Holiness, so I knew what they were saying what they were saying was not true. But sometimes when you see it, you have I felt something. I saw, and I felt really odd. I felt weird. But after talking to my friends and talking to Tibetans especially about things in Tibetan culture that I particularly didn't understand, even though I've been living here for a long time, I felt more assured about what I saw, just from being open to hearing things a little bit different than what I'm used to in my own culture. And because of that, I realized that everything that people were saying and the rage mob that's going on and all the hate that's going on being thrown, particularly towards Tibetan people, towards their leader, doesn't make any sense to me. And that's been my feeling up till now, especially now that I've seen the child who was with His Holiness and the mother, they have spoken at that time. Yes, I mean, all I would like to request to the world is just, think about how other cultures feel and think about the people here and just don't lambast them like that. Like, see a little bit behind of what's going on, because I really don't think that this Holiness is a pedophile. हाय नमस्कार, मेरा नाम अमर सिंह है और मैं मैक्लोडगंज यूनियन में एक गाड़ी चलाता हूँ। और जो अभी ये सब कुछ देखने को जो आ रहा है, ये जो फेक जो न्यूज़ है कि गुरुजी ने ऐसा कुछ गलत किया है, तो गाइज़ मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे जो गुरुजी हैं वो एक धार्मिक स्थल के बहुत बड़े गुरुजी हैं और उनके बारे में जो ये न्यूज़ फैलाई जा रही है वो बिल्कुल फेक है। एक बाप और बेटे का रिश्ता कैसा होता है आप सबको जानते होंगे, तो वो जो एक प्यार था वो एक गुरुजी ने बिल्कुल अपने बेटे की तरह किया है, ऐसा कोई गलत नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि गुरुजी ने ऐसा कुछ गलत किया है, ये सब फेक न्यूज़ है हमारे जो। और जिस भाई ने ये जो न्यूज़ फैलाई है, तो मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि ऐसा मत करिए और आगे से थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ऐसा, क्योंकि आप जो जिसके लिए आप ये जो न्यूज़ जो फैला रहे हैं, गलत न्यूज़ फैला रहे हैं, ये बिल्कुल ही बहुत ही गलत बात है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि ऐसा जो ये न्यूज़ आपने जो फैलाई है, वो जो गुरुजी ने जो प्यार जो दिखाया है उस बच्चे के लिए, वो एक आप मान सकते हैं कि एक गुरु और एक उसके लिए है, मतलब कि वैसे है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा मत कीजिए और हो सके तो इस जो न्यूज़ को, और मैं गाइस सबसे बोलना चाहता हूँ कि ये जो न्यूज़ है इस फेक, सो आप इसके बारे में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो हमारे जो गुरुजी हैं, अगर ये जो गलत करना चाहते तो बहुत पहले कर सकते थे, अदरवाइज़ आज तक हमारे गुरुजी ने कभी कुछ किया नहीं है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस न्यूज़ फेक न्यूज़ है, आप इसके बारे में कुछ वो मत कीजिएगा। और हमारे गुरुजी हैं वो हमेशा
अच्छे हैं, हमेशा रहेंगे और थे।